नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आपण जदि आम चैनल को प्रथम आसती दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी भल लगे निश्चय वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलें जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। तो देखा ये कर्मचारी मानी जो कर्मचारी अवसर बयस अच्छी नहीं गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी। सुप्रीमकोर्ट को निर्देश लागू करने निर्देश और कर्मचारी कहीपर एक प्रकार यहाँ गोटे खुशी खबर। तो आम से विषय में संपूर्ण आलोचना करवा। दयाकोरी वीडियो को शेष पर्यटन देखिए जहाँद्वारा आप संपूर्ण खबरटी विषय में जानीपर। तो चलतु डेर नक आरंभ करवा आज गुरुत्वपूर्ण खबरटी। तो ये आप देखिपे अलाहाबाद हाइकोर्ट जो न्यायालय सब गोटे सूत्र बंधा मुझे आगुरी अनेक थर कही। तो जो सुप्रीमकोर्ट हो हाइकोर्ट हो समस्ते गोटे सूत्र बंधा। ये देखो अलाहाबाद हाइकोर्ट इम्पोजेस 50,000 कॉस्ट ऑन सेंटर केंद्र सरकार रेलवे उपरे फॉर डिनाइंग नेशनल इंक्रीमेंट टू एम्प्लॉई रिटायरिंग ए डे बिफोर जोटा कि जुलाई 1। तो जो कर्मचारी जनक जो कर्मचारी को जो आमर नेशनल इंक्रीमेंट दवाई मना करिया द्वारा जो अवसर जो दिन रिटायरमेंट डेट थिला से जुलाई 1 रे इंक्रीमेंट डेट और ता पूर्व से रिटायरमेंट करते। तो तापर नहीं गोटे गुरुत्वपूर्ण राय रही। देखिए ये अलाहाबाद हाइकोर्ट हाज इम्पोज ए कॉस्ट ऑफ 50,000 50,000 टंका जुर्माना कर भारत सरकार एवं वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे फॉर डिनाइंग द बेनिफिट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट टू एम्प्लॉई रिटायरिंग 30 जून। ताले जो कर्मचारी अवसर नौ 30 जून ने तांकू नेशनल इंक्रीमेंट जो इंक्रीमेंटा जुलाई 1 रे पड़ुथो ताकू दवाई मना करिवारु अलाहाबाद हाइकोर्ट ये फाइन इम्पोज करचंती। डिस्पाइट आप जानते डिस्पाइट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट तांको डिसीजन देइथिले डायरेक्टर जोटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स कैपिटिशियल अदर वर्सेस सीबी मुंदिनामानी एंड अदर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एम सिद्धाराज जो केस क्षेत्र में माननीय सुप्रीम कोर्ट जो गुरुत्वपूर्ण निर्देश देते 12 एम्प्लॉई ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो अच्छा पिटिशनर रिटायर्ड जो मैंने 30 जून में रिटायर्ड करते डिफरेंट ईयर रिटायरिंग 30 जून जोटा कि 30 जून ने दे वेयर डिनाइड द एनुअल जो इंक्रीमेंट व्हिच अक्योर ऑन द 1 जुलाई ऑफ ईच ईयर as they were not in the service of 1 July. सेतिपाई पिटिशनर चैलेंज दिस डिनियल ऑफ इंक्रीमेंट ऑन ग्राउंड दैट दे हैड वर्क फॉर एन एंटायर ईयर फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून पर्यंत से कार्य करते जोटा कि वेयर एंटाइटल टू इंक्रीमेंट इवेन दो दे रिटायर्ड 30 जून 30 जून में से रिटायर्ड कलापर भी गोटे इंक्रीमेंट दवा कथा जहाँद्वारा कि इंक्रीमेंट फल से जो पेनसनटा निश्चय वृद्धि पाइब पेंशन बेनिफिट जो रही वृद्धि पाइब ताकू नहीं से दाबी करते। इट वाज प्रेड दैट द बेसिक पे जो रही एंड रिटायर्ड बेनिफिट ऑल्सो नीड टू बी रिवाइज आफ्टर ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट पर बेसिक पे और रिटायर्ड बेनिफिट वृद्धि पाइब। पिटिशनर रिलाय ऑन जोटा कि आप जानते कैपिटिशियल एवं जो भारत सरकार गोटे विरुद्ध रे जो केस होता व्हेयर द सुप्रीम कोर्ट ये कही हैड हेल्ड दैट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायरिंग 30 जून ought to be granted national increment and the retired benefit to be calculated after granting the increment. कर्मचारी को इंक्रीमेंट देला परे ही तांकर नेशनल इंक्रीमेंट देला परे ही तांकर कैलकुलेट करा जिवो कोन ना तांकर पेंशन एवं रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करा जिवो। द कोर्ट कॉल्ड फॉर ए पर्सनल एफिडेविट डायरेक्टर जनरल जे डीजी अछंती आरपीएफ रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली टू एक्सप्लेन व्हाई द नेशनल इंक्रीमेंट टू एम्प्लॉय वाज नॉट ग्रांटेड इन व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अनुसार कहीं दिया नजिबो। इन द एफिडेविट इट वाज स्टेटेड दैट सिंस द पॉलिसी फॉर ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट had not been updated after the judgment of the Supreme Court, the benefit of increment occurring 1 July could not be granted to the petitioner after their retirement जो माने कि 30 जून ने रिटायरमेंट करथिले। तो इट वाज फर्दर स्टेटेड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाज नॉट ऑथराइज्ड टू यूनिलेटरली टेक ए डिसीजन ऑन एक्सटेंडिंग द बेनिफिट दवाई रेलवे मिनिस्ट्री निज तरफ डिसीजन नहीं पारे बिकज जोटा कि अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल जो 1961 अनुसार व्हाइल द मैटर वाज अंडर कंसिडरेशन बिफोर नोडल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जोटा कि निष्पत्ति निये सब क्षेत्र में वेरियस एम्प्लॉय ऑफ द रेलवे अप्रोच वेरियस कोर्ट सीकिंग नेशनल इंक्रीमेंट व्हिच वाज ग्रांटेड टू देम।
तो इट वाज स्टेटेड दैट सिंस द नंबर ऑफ एम्प्लॉई हु रिसीव्ड फेवरेबल ऑर्डर वाज ह्यूज देयर वाज ए प्रोब्लेम जोटा कि से गोटे प्रोब्लेम अच्छी इम्प्लीमेंटेशन एंड पेमेंट ऑफ ड्यू कंटेम्प्ट पिटिशन वे आर ऑल्सो फाइल्ड अगेंस्ट द रेलवे प्रोब्लेम अरोज regarding implementation of the court order and extending benefit to various employee due to which railway moved to a clarification application जोटा कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एम सिद्धाराज जोटा तांको भीतर गोटे केस होता इंटर आलिया स्टे ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट ग्रांटिंग नेशनल इंक्रीमेंट टू द एम्प्लॉई रिटायर्डिंग जी कि 30 जून ने रिटायर्ड करथिबो किंतु तांकर इंक्रीमेंटा 1 जुलाई रे तांको दबाकू माननीय सुप्रीम कोर्ट कही फर्दर इन द एफिडेविट इट वाज स्टेटेड दैट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ऑल्सो फाइल्ड एन इंटरवेंशन application in the aforesaid case seeking a chance to place it agreement regarding grant of national increment also seeking a stay on apex court order as around जोटा कि 19,718 जन फेवरेबल जजमेंट 19,718 फेवरेबल जजमेंट had already been passed by various court in this country in favor of retired employee मानक पई the apex court passed an order on the clarification allowing the respondent टू फाइल एडिशनल डॉक्यूमेंट गोटे ये करते विषय बेसिस दिस द डायरेक्टर जनरल इन हिज पर्सनल एफिडेविट से स्टेटेड दैट द मैटर वाज सब जुडिस बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड द इश्यू ऑफ ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट हैड नॉट अटेंड फाइनालिटी क्षेत्र में कही तो जस्टिस जे मुनिर जे ऑब्जर्व दैट व्हेन द जजमेंट वाज नॉट स्टेड और सेट असाइड मेयर पेंडेंसी और क्लैरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन could not a ground to deny the benefit of the same to the employee एटी माननीय कोर्ट कही कि जेहेतु सुप्रीम कोर्ट रे जजमेंट को स्टे करा जायनी कि सेट असाइड बा ताको मना करा जायनी तेणु करी जो पेंडेंसी ऑफ क्लैरिफिकेशन जो एप्लीकेशन से ग्राउंड रे बेनिफिट मना करा जाय परिबो नै टू द एम्प्लॉई कर्मचारी को इट ऑब्जर्व दैट व्हाइल सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ ए जजमेंट इज राइट ऑफ पार्टीज pendency of the application will not mean that the respondent authority will refuse to carry out the order of the writ court passed in pursuant of order of the Supreme Court. तो से देखा the government of India cannot sit a judgment on a writ of the court once issue a writ stop only if the stay in competent proceeding like an appeal if allowed from the order of review clarification क्षेत्र में ये कहला the court noted that contempt case जो रही आप देखिए contempt notice should have been issued against the Director General. However, it refrained from doing so and cautioned Manoj Yadav Jason, Director General, Railway Protection Board, Railway Board, New Delhi, who had filed personal affidavit, being careful of the pleading being made personal affidavit. 30 last of the court observed that Supreme Court had passed an interim order granting benefit of the judgment, जोटा कि जजमेंट क्षेत्र में आगुरी सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट देते जोटा कि ये देखा शेष माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते अकॉर्डिंग द कोर्ट डायरेक्टेड दैट द पिटिशनर पेंशन बी रिवाइज एंड दे बी पेड द एरियर फ्रॉम 1/5/2023 विथ ए पीरियड फ्रॉम 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेरियस कंसर्न डिपार्टमेंट व्हाइल अलाउइंग द पिटिशनर द कोर्ट ऑल्सो इम्पोज ए कॉस्ट ऑफ 50,000 पेबल टू द पिटिशनर तो यही भाव में यहाँ गुरुत्वपूर्ण ऑर्डर दिखाई तो आज थी ये खबर जदि खबर आपको भल लगे दयाकर निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए भूलिए धन्यवाद।